So I welcome you all towards the first session of ACCA Business Technology. लेकिन इस सेशन में स्टार्ट करने से पहले I would just wanted to give a brief about what exactly ACCA is, what you guys are going to learn in these particular sessions going further ahead. क्योंकि आप लोग जो है सो डिसीजन ले रहे हैं, but still I just want to explain you all what ACCA is and what you are going to get in further. हम लोग के जो क्लासेस है आज जो है हम लोग कंटेंट शुरू करने वाले ही है. बिजनेस टेक्नोलॉजी पहले करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट हाफ वी आर गोइंग टू डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग and by around 12:30 1 o'clock we'll be done for the day as well. So as you guys can see it on the screen, let me just open up and let me just keep it here only. Now ACCA has 13 papers. Okay, now in this 13 papers what all you are going to learn. Number one is business technology. Now business technology is this paper which is there in front of you. Business technology will give you how businesses enable technology for their growth. How businesses enable technology for their growth. Okay, then we have management accounting. In management accounting we would be looking into कि एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे करेंगे आप लोग. सपोज वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, जैसे कि ये फोन है, ये फोन का प्राइस क्या है $1000, लेकिन इसको बनाने कितने पैसे हुए हैं, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये हम मालूम करेंगे थ्रू विच पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. उसके बाद आता फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, या नहीं पढ़ चुके हैं. मतलब सीईसी में अगर कॉमर्स अगर आप पढ़े हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यू ऑलरेडी लर्न. बट इफ यू नॉट, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुश इन मोर एफर्ट. ज्यादा एफर्ट डालना है. ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो फिर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक्स अगर आपके ब्रशअप नहीं है तो उसको ब्रशअप करके देन फर्दर आगे बढ़ना पड़ेगा. तो ये हो गया, ये 3 पेपर इज कंप्लीटिंग आवर नॉलेज लेवल, या फिर ऐसा बोल लो कि एक फाउंडेशन फंडामेंटल लेवल जो स्टार्ट करेंगे. उसके बाद जो पेपर शुरू होते हैं वो है कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ. Corporate business law is basically understanding the laws and rules and regulations. How does an organization need to run? जब भी हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ की, we are talking about how does an organization deal with each other, what are the rules, what are the memorandums to be taken care of. हम जो है सो क्रिमिनल लॉ की बात करने वाले नहीं है, जेल गए ये कानून के हिसाब से वो बात करने वाले नहीं, वो पढ़ने वाले भी नहीं है इसमें. Then we move on towards performance management. A performance management is nothing but an addition or an extension of management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम पढ़े कि कॉस्ट कैसा करते हैं प्रोडक्ट का, वही कॉस्ट के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसा करेंगे हम लोग. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज्यादा मूविंग एसेट्स होते हैं जो जल्दी जल्दी बिक रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो खाली पड़े हुए रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं हुआ होता है. बेसिकली द रिसोर्सेज आर देयर, but how do you optimally utilize those resources, we are going to learn further in performance management. Then the next paper we have taxation. अब taxation में हमारे पास UK tax है, global tax है, we have different taxes from which we can learn. We can choose one and learn one. ये क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी अलग से अलग कैसा हो जाती. चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टैक्स की बुक एक फ्लोर की होती, मतलब अगर you stack of the books of taxation you can go to one floor, whereas ACCA के अंदर taxation की बुक इतनी ही है बस, and that's done. Why? Because we learn all the basics and then if you want to grow further ahead आप कोई भी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं. टैक्सेशन में आपका पूरा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, which is a big drawback in the chartered accountancy qualification. उसके बाद आता है financial reporting. जो सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सटेंशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यहाँ पे हम लोग IFRS पढ़ने वाले, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. अगर उसको थोड़ा सा और इजी वे में बताऊं तो जिस वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज मीनिंग लाइक हम जो है बहुत ज्यादा सामान बाहर से खरीद रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर्स हो रहे हैं. व्हेन अकाउंटिंग इज हैपनिंग क्रॉस बॉर्डर्स तो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ वी कैन नॉट बी ऑन पार. व्हाट वी नीड टू डू इज
we need to leverage and understand global accounting standard. तो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स विच इज आईएफआरएस, जो हम फर्दर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऑडिट अश्योरेंस। बेसिकली जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के बाद ऑडिट अश्योरेंस से एग्जामिन करेंगे, वी विल एग्जामिन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, वी विल एग्जामिन कि ये जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, दैट इज ऑडिट अश्योरेंस। और फिर आता फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन बिजनेसेस मैनेज देयर फाइनेंसेस इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे। अब जैसे कि मेरे पास सपोज 50 लाख रुपए है, अब वो 50 लाख रुपए मैं हाथ में कैश रखूं या बैंक में रखूं या फिर मैं जाके कहीं इन्वेस्ट कर दूं। अब मैं जाके कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो फिर आप सवाल पूछेंगे कि भाई ये 50 लाख का आपका कुछ अभी कुछ काम है, अभी कुछ काम है, तो फिर कीप इट फॉर दैट वर्क or else go and invest it until when you want to get it back। जैसे कि आपको 6 महीने बाद जरूरत है पैसों की, तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जो 6 महीने में आपको पैसे वापस आ जाए, या आपको 5 साल बाद भी आए तो चलेगा, तो फिर यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट लाइक दैट। लेकिन पैसे को खाली नहीं रखना चाहिए, दैट्स व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड देन देयर आर मेनी मेनी वेज वेयर वी नीड टू टेक केयर अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दैट। ये कितने पेपर हो गए इन टोटल? 9 पेपर्स हो गए। पहला वाला हो गया नॉलेज लेवल, देन द नेक्स्ट वन इज स्किल्स लेवल विच इज गेटिंग कंप्लीटेड, और उसके बाद आया था स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल में आप पढ़ते स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। ये 2 पेपर कंपलसरी पेपर होते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एक ऐसा एग्जाम है जो 4 घंटे का है, बाकी जो है वो कम घंटों के हैं, 4 घंटे का है, और एक ही क्वेश्चन रहता है उसमें, एक ही केस स्टडी रहती है उसमें। वो केस स्टडी क्या बना रही है आपको? दे आर मेकिंग यू अ बिजनेस लीडर who can give strategic insights to a business, who can be the strategic mind in a business। okay, I'm not talking about के आप accountant बनने वाले हैं, आप क्या बनने वाले हैं यहाँ पे? you're going to become a strategic business leader through what? Strategic business reporting। and then further on you have some advanced level papers which is advanced financial management, advanced performance management, advanced taxation, and then advanced audit and assurance। अगर आप ये पेपर्स को देखें, ये पेपर्स इंटर रिलेटेड है ईच अदर से। जैसे कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन इज आल्सो रिलेटेड टुवर्ड्स टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एश्योरेंस इज आल्सो रिलेटेड टुवर्ड्स ऑडिट एश्योरेंस इन हियर। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये क्वालिफिकेशन पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। देयर इज नो वे स्टेटिंग दैट कि अरे सपोज हम कुछ एक पेपर स्किप कर दिए तो क्या होता है यहाँ पे, द फाउंडेशन इज गॉन, या फिर आप आगे का कोई पेपर आप मिस कर सकते हैं क्या? नहीं। आप जब एक बार ये जो नॉलेज लेवल हम लोग जो ये पेपर पढ़ेंगे, these papers which we are starting right now, this is going to be a base for the complete qualification to come, for the complete qualification and your career to be made। अब यहाँ पे लेट्स ऐड ऑन सम मोर थिंग्स कि सर इसका एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, हाउ इज द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर दिस? वेल, स्टार्टिंग 1 2 3 इट इज 2 hours each, 2 hours each। बिजनेस टेक्नोलॉजी 2 घंटे का एग्जाम है। सर एग्जाम होगा कैसा, सवाल है ना आपका ये। तो एग्जाम होगा कंप्यूटराइज्ड, इनफैक्ट all the ACCA papers are computerized, all papers, there's no pen paper, it's a complete futuristic qualification। तो 2 घंटे for each examination। now 2 hours for each examination, it is complete objective based। objective based का मतलब ABCD नहीं है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एमसेट के एग्जाम से ऐसा कुछ एग्जाम में क्या रहता, कोई भी एक ABCD आप टिक कर दो आ जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल रेस्पॉन्स आंसर्स रहेंगे, मतलब 6-7 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 2 ऑप्शन सही रहेंगे या 3 ऑप्शन सही रहेंगे। यू नीड टू आंसर इट दैट वे, यू नीड टू आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स आल्सो, यू शुड आल्सो बी आंसरिंग मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स। ये सब का एक कॉम्बिनेशन बनके
बनता है ये बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। और खाली दो दो तीन तीन मार्क के पेपर क्वेश्चंस नहीं, देयर विल बी लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल, बट यू डोंट नीड टू यू नो राइट इट डाउन या पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि फाइनल अकाउंट हम बनाते वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट द पॉइंट इज यू शुड बी एक्टिव इनफ सो दैट यू वुड बी एबल टू आंसर दिस। इज दैट क्लियर? ये हो गया एग्जाम स्ट्रक्चर बीटीएमए और एफए का। उसके बाद द नेक्स्ट पेपर्स, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ इज आल्सो इन द सेम वे, 2 hours ईच, एंड आल्सो ये जो 3-4 पेपर है, ये 3-4 पेपर जो है, ये एग्जाम्स आप कभी भी लिख सकते हैं। व्हेन कैन यू राइट? नो, बीटीएमए एफए, बीटीएमए एफए एंड सीपीएल इज एनी टाइम, यू कैन गिव इट एनी टाइम। आप जब कोई भी तैयार है एग्जामिनेशन के लिए, यू कैन गो अहेड एंड गिव इट। ओके, बट द थिंग इज यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड गो अहेड एंड गिव इट। उसके बाद के जो पेपर्स है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या आगे के जो भी पेपर्स है, these papers are in a particular examination window, which is March, June, September and December. March, June, September, December. These are the dates of these examination. Proper examination center assign किया जाता है. You should go there, give your exam at the center, और center पे भी computers रहते हैं. You need to answer it on the computer only. अब ये सवाल आएगा, सर अब तक तो ऑब्जेक्टिव था, आगे का कैसा? तो आगे आप जो है ना काम करने वाले हैं, आंसर करने वाले हैं एक्सेल शीट पे, वर्ड डॉक्यूमेंट पे। आई विल बी आस्किंग, सर एक्सेल शीट पे क्या हम पूरे अकाउंटिंग के फॉर्मूलाज डाल के हम काम करने वाले हैं? तो यस सर, हाउ कैन वी एबल टू डू सर? वी विल बी ट्रेनिंग यू ऑन दैट एज वेल। क्लासेस में यू विल बी लर्निंग हाउ डू यू आंसर इट ऑन एक्सेल, so that you are ready for the future. You don't need to do anything separately. जो कुछ भी काम आप यहाँ कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी आपको वही काम करना पड़ेगा. देयर वोंट बी दैट मच बिग ऑफ अ गैप. एंड एवरी ईयर सितंबर में this qualification goes under a check that whether there is a requirement of updation of syllabus. सिलेबस का अपडेशन करना है क्या, या कुछ ऐसा है जो रेलेवेंट नहीं है उसको निकाल देना है क्या? तो जो रेलेवेंट है उसको ऐड अप करते, जो इररेलेवेंट है उसको माइनस कर देते, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपन एट ACCA. अब बताइए, आपके पास और कोई डाउट है, सवाल है इसके बारे में? सवाल के सर, ये करने के बाद हम हमारी काबिलियत क्या होगी? ये पूरे अलग अलग एग्जाम, ये पूरे अलग अलग एग्जाम है, इसको करने के लिए वक्त लगता है, 2 से 2.5 साल लगते हैं. बच्चे जो कर लेते हैं ये, इफ दे डू इट, देयर फ्यूचर इज अनमैच्ड. But with that, you should be adding up your communication skills, your technical skills. These are the things which are to be added on. जो वक्त के साथ साथ हम बताएंगे आपको कैसा भी. But these papers, believe me, are so futuristic. आपको ऐसा दिखेगा कि you are going to be in that foot. अब जैसे कि पहले के 3 पेपर्स है, पहले के 3 पेपर में सवाल भी ऐसे आएंगे कि suppose you are a junior accountant analyst somewhere and you're working and you face this problem, how are you going to answer it? Okay, you're an accountant at so and so place, how are you going to answer it? ये रहेगा पहले के 3 पेपर में. जैसे ही आप नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे, यू आर एन असिस्टेंट मैनेजर एट सो एंड सो कंपनी एंड यू फेस दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट? वैसे सवाल रहेंगे इधर. व्हेन यू गो ऑन टुवर्ड्स द प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल में क्या होगा? And in the professional level, you will be learning. If suppose you are a strategic leader at so and so place, you have been faced with this and so challenge. How are you going to answer it? तो ऐसे सवाल रहेंगे, level by level you are going to get much more advanced questions. Okay, is that clear, everyone? Those who are, oh, the people online as well. Is that clear, everyone? Yes, sir. All right, then let me just get started. तो ये है हमारा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर.
आप लोग का पोर्टल कैसा रहने वाला है? अब आप लोग का रिजल्ट, सब लोग का रिजल्ट आ गया ना 12th का? जिसका नहीं आया कैन वेट एंड वेट फॉर द लॉन्ग मेमो, बट जिसका आ गया, what you guys need to do ahead at first is get done with your ACCA registration. जैसा आपका ACCA का registration हो जाएगा, each one will get this portal. Each one of you is going to get this portal. और यहाँ पे क्या होगा, आप खुद आपका मतलब, I'm going to share this in the class only, but what can happen is you guys can manage it. क्यों? क्योंकि यहाँ पे there is no book going to be given, there is no material required. आप एक रफ बुक लेके जो है आपके नोट्स बना सकते हैं उसके अंदर, बट एवरीथिंग इज हियर. नाउ इफ आई हैव टू जस्ट शो दैट टू यू, अब जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिस क्विजेस अगर है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस. कितने क्वेश्चन है ये? 421 क्वेश्चंस आर अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस फॉर दिस कंप्लीट पेपर बिजनेस टेक्नोलॉजी का. आप अगर उसमें पास करते हैं या अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जैसे कि 82% इज बीइंग गॉट टू द स्टूडेंट हु डिड दिस, या फिर क्विजेस है जो हर चैप्टर के बाद क्विज होता है, इफ यू कंप्लीट दैट, जो आपको इधर ही करना है, आपको कोई अलग बुक की जरूरत नहीं है until unless you have a book and a calculator for your own self. Okay, you even have flashcards to learn that what is business technology, it's a social arrangement. या फिर okay, yes, you got it right. Next, what is a stakeholder? What is a stakeholder? A person who has interest in the company, okay, who can get affected by the organization. You get to know about it, you go on, you learn further like this. तो यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा. और चैप्टर्स में, लेट मी जस्ट शो यू द चैप्टर्स आल्सो, राइट? जैसे कि you go through this chapter, you start with it, like this is a visual representation of it, that what all you're going to learn in this. Then what do, you move on further whether you understood this or not. Next, then you learn what is a business organization, how does a business organization run, what are the types of business organizations. You understand, you make notes, you move further. You understand, you make notes, you move further. So you're just going to make notes, you don't need to, for reference, all reference, these are going to be there. Okay, now in addition to that, in addition to this, आप जब क्लास में रह रहे हैं, when all these classes are getting recorded, like I can see some people who had to be here but they are not here, they are online there. So what can I do is that's fine. अगर आज कल के दिन जैसे कोई स्टूडेंट नहीं आ सकते क्लास को, ऑनलाइन अटेंड करना है, they can attend online, and this gets recorded also, and this get shared also with the student if they want it for reference. या फिर सपोज कोई क्लास आप मिस भी कर दो तो फिर एवरीथिंग इज अवेलेबल. तो एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच हमारे पास अवेलेबल है ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए. So is that clear? Shall we get started or you have any doubts? Any doubts, any questions? Any doubts, any questions? Any doubts, any questions? No, No, sir. sir, no, sir. So then, let's get started here. Now, before you start, it says about, okay, what all are the things, what is the study text, जो मैं सब कुछ आपको already बता चुका हूँ. So what we can do is we can go on and jump towards the first session of business and technology. I would recommend you guys have book and pen with you so that you guys can make notes. Now, as an ACCA, you're going to be an advisor to businesses. Remember that. Okay.
Now, forming business organizations. Why do we form business organization? What are the purposes of it? What are the attributes of it? What are the common features of business organizations? Then, what are the differences of different types of business organizations? Now, there are commercial organizations, there are not for profit organizations, etc. etc. What we are going to do is we are going to learn all these one by one. Okay. तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग इसमें तो हाई है क्योंकि ये तो मेरा पोर्टल है ना भाई, कंप्लीटेड है। आप लोग का रजिस्ट्रेशन, आप लॉन्ग मेमो आ गया ना, आपका आ गया, आपका आ गया, आपका आने वाला है ना। ओके, once you get that your registration can, in fact कर सकते हो registration, it's not a big deal. Now, what's a business organization? What's a business organization? अरे लिखा हुआ है भाई, टेक्स्ट पढ़ लो, पढ़ो। Social arrangement to achieve collective goals through controlled performance. इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। Is a business organization like that? A social arrangement to achieve collective goals through controlled performance. थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। A social arrangement का मतलब people gather together to do this work. Okay. What is the collective goal? मतलब कि सबका एक ही गोल रहता है यहाँ पे, and that too through controlled performance, because it's not just left alone for anyone to do it या फिर देखेंगे क्या होता, it's controlled performance, and that's how it becomes a business organization. I want you guys to make this because there are chances you getting questions from this, और फिर ये बहुत एक silly question है जहाँ पे miss out कर सकते हैं, please make a note of it. Done. Let's get further towards it. A social arrangement, group of more than one person, a formal, informal relationship with the group. It can be charities, government, corporates, or associations, professional bodies. ये कौन से हैं? Not for profit organization. Then there is business organization, which is companies, partnerships, joint ventures, which are profit organizations. Then talking about their collective goals. A common objective that organ want to achieve, the purpose of the organization, that's their collective goal. अब जैसे कि फुटबॉल अगर हम खेलने जाए और हर एक का गोल अलग हो, तो एक टीम है, एक टीम में है 10 लोग और वो बोल रहा है कि नहीं हम ये गोल में हिट करेंगे, नहीं हम वो गोल में हिट करेंगे, आर दे गोइंग टू विन अ मैच? या जस्ट इमेजिन इफ देयर इज नो गोल पोस्ट ओनली एंड देन यू आर प्लेइंग फुटबॉल, डज इट मेक सेंस? नो। या फिर कोई टीम मेंबर है बोल रहा है कि नो आई डोंट वांट टू वेयर दिस कलर जर्सी, आई वांट टू वेयर दैट कलर जर्सी, या फिर आई डोंट वांट टू बी फिट इन दिस पर्टिकुलर टीम, विल दैट टीम वर्क? No, it should be a collective effort, then only a team is going to survive or a team is going to thrive. Until then it's going to be a useless effort only. That's collective goals for you. Then controlled activities, ये activities का proper accountability होना चाहिए। accountability का मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम at the end of the day it should be looked further, it should be cross checked कि ये काम बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। if it is not done then it is left for disaster to happen only if there is no controlled performance. Okay, you guys can make note of this as well. When you're going to make notes, make sure that you do not need to write everything as it is what's written there, because anyhow you have this. What you need to do is you need to make note in such a way that you understand in a short format, in a really short understandable format. ठीक है, as it is लिखने की जरूरत है।
कंट्रोल्ड एक्टिविटीज के अंदर क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस, अकाउंटेबिलिटी, एवरी टाइम देयर शुड बी अ मैनेजर हु लुक्स फॉर इट, मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर रहता, who looks out of that manager, and manager should be a manager, he should not be a damager. Those are the things which we need to write it down in our notes. So please go ahead, make notes of this. Day one से start कर लो ये. Write it down. Write it. Understand and write it down. If you're not understanding anything, you can ask me. यही ना? Done. 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 Those who are there online, are you guys done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, complete. Yeah. Shall we move ahead? In that same manner, in this context, what happens here is I move on towards the next one because I already have this particular rating of understandability given already. You guys need to give it when you do it individually. Okay. Okay. The primary purpose of forming an organization is primary purpose operate beyond the capacity and capability of a single individual. क्योंकि एक आदमी कितना ही काम कर सकेगा. What he needs to do is create an organization, have a team, and that team works for them. Okay. And if a team is working together, what happens? Capacity उनकी increase हो जाती. ठीक है. When if suppose I am working at one place that is 8 hours a day, if there are 4 people working in that particular same thing, then how many hours in a day it becomes? 4 लोग. 8 hours a day. How many hours do they work? Huh?
हाँ 32 hours by 22 32 hours. Why? Because that is the capacity which has been increased. अब जैसे कि एक कैपेसिटी के ऊपर और एक डेफिनेशन एक होता है कि एक आदमी 50 किलो उठा सकता है, दूसरा आदमी भी 50 किलो उठा सकता है, लेकिन जब दो मिल जाए तो 150 किलो उठा सकते हैं. Yes or no? And that's called synergy. That's called synergy. मतलब एक आदमी तो अपना काम कर लेगा, दूसरा आदमी भी अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर दोनों मिलके एक साथ एक काम करे तो फिर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट और अच्छा होगा. That's the end of the story on that. But the thing is, उन दोनों को या फिर एक टीम को एक पिच पे लाकर या एक चीज में लाकर कैसा काम कराया जाए, वो बहुत चैलेंजिंग होता है. बहुत चैलेंजिंग होता है कि सबको टीम में रह के सबका एक कलेक्टिव गोल रखो. बिग टाइम प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व करने ही वी आर हियर इन दिस. But we get into this. A bakery meets the demand for its goods by having investors contribute. The bakery's workforce consists of several people, bakers, administrators. This allows the bakery to generate much more profit and returns. Why? Because the people are there in it. Then comes a specialization. कोई भी उन लोगों को लाना है जो उस काम के specialist है. You cannot just get any random Tom, Dick and Harry and say that do this work and pay them and say that and expect some really good thing. You always need a specialist for that particular work. Okay? अगर आप एक टीम बनाते हैं, एक टीम में आप स्पेशलिस्ट लोगों को ला सकते हैं, या फिर उस टीम में उन लोगों को रख के उनको ग्रो करके स्पेशलिस्ट बना सकते हैं. With experience they can become specialist as well. Then synergy, 2 plus 2 is greater than 4 is equal to synergy. एक आदमी 50 किलो, दूसरा आदमी 50 किलो, दोनों मिलके 150 किलो उठा सकते. तो वो क्या हुआ, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई उनकी. 1 plus 1 equals to 2, that is energy. 1 plus 1 एक और एक 11 हो गए, that is synergy. Are you guys able to connect what I am trying to say? 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is equals to 11 is equals to synergy. Then the same thing, reduced risk. Risk reduced is basically shared risk among the members, among these people around. They share each other's risk, they share each other's responsibility. हर काम किसी एक पे नहीं आ जाता. अब जैसे कि 15 दिन बाद सपोज एक टीम में कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई हमारे को जाना है, हमारा हर साल का रहता, हम लोग को जो है बकरे खरीदना है, बेचना है, हम लोग एक काम पे नहीं आ सकते. तो क्या होता, क्या उनका जो रेगुलर काम है स्टॉप हो जाता? क्या नहीं, उनके दूसरे टीम मेंबर्स टेक केयर कर लेते. यस और नो? होता ना ऐसे ही. सो द थिंग इट गोज ऑन. अब जैसे कि अगर आप देखो, ईद का दिन है, ठीक है, और आप गाड़ी चला के निकले और पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल डलाना है, तो पेट्रोल पंप पे लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ईद है बोल के वो लोग बंद कर दिए क्या? नहीं बंद करे. क्यों बंद नहीं करे? क्योंकि वो एक टीम है. जिसकी ईद है वो ईद मनाने चला गया, जिसकी ईद नहीं है वो काम कर रहा है. एंड दैट्स द पावर ऑफ अ टीम एंड दैट्स द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. अब जैसे ईद का दिन है, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग चलो लेट्स गो आउट फॉर सम लीजर एक्टिविटीज. ओके, गो आउट फॉर सम लीजर अम्यूजमेंट पार्क. तो क्या ईद के लिए अम्यूजमेंट पार्क बंद रहता है क्या? वो तो और ज्यादा कैपेसिटी पे काम कर रहा है. तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी ईद नहीं है क्या? पॉइंट इज देयर. अब ये तो इंडिया में आप बोल रहे हैं, यू गो टू एनी गल्फ नेशंस आल्सो, ईद के दिन ओवर कैपेसिटी पे काम करते हो. Are you guys understanding the understanding of how a team should be functioning further? Would you guys like to make notes out of this, या फिर कुछ ऐसा लिख लो जो मैं आपको बोला और आप लोग को याद रह गया? Make note of this, please make note of this, क्योंकि कल के दिन ये आपको बहुत काम आने वाला है. किताब ऐसी बंद मत करो. Please make note of this. Zoom out.
लिखेगा नहीं फिर तो नो प्रॉब्लम. जैसा 10th इंटर में जो जैसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता, व्हाट इज सिनर्जी डिफाइन इन 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा आने वाला नहीं है आपको. ठीक है, समझना जरूरी है कि सिनर्जी होता क्या. 2 + 2 इज ग्रेटर देन 4 इज इक्वल्स टू सिनर्जी. ये अगर आप समझ गए काफी है, आपको रट्टा मारना कहीं भी नहीं है. एक हफ्ते के अंदर अंदर सबके पास ये पोर्टल होना चाहिए. You should have this portal. Yasin has this portal. You guys can share at least. Shall we move ahead? Done. All right, let's move forward now. The common features of business organization. Number one, stakeholders. Now, stakeholders is something which you guys need to understand it right now, right here. Now, who are these stakeholders? Who are these stakeholders? Stakeholders are those people who interact with the organization and have interest in the organization. ठीक है, अब जैसे मेरे पास आईफोन है. Am I a stakeholder of Apple? Yes, I am a stakeholder of Apple. I'm not a shareholder of Apple. I'm a stakeholder at Apple. ये stakeholder और shareholder में बहुत बड़ा फर्क होता है. स्टेक होल्डर वो होता है जिसका इंटरेस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो क्या मेरा इंटरेस्ट है एप्पल में? Yes, I am having interest. I'm a customer at Apple. Okay, I'm actually keen on what's happening at Apple because I'm a customer at Apple.
So I am a stakeholder. In that same manner, the government of India, are they stakeholders at Apple? Yes. उनको भी इंटरेस्ट है कि भाई एप्पल कब आएगा और यहाँ पर आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में डालकर हमको एप्पल सस्ते में मिलेगा. People are thinking about it. Then, is the government of US stakeholder of Apple? Yes. Everyone who is having interest in that particular organization is a stakeholder. अब स्टेक के अंदर और कुछ आता है कि सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ला सकते कुछ उसके अंदर. कैन कस्टमर्स ब्रिंग इन्फ्लुएंस इन एप्पल? द आंसर इज यस. नॉट वन सिंगल इंडिविजुअल एज अ कस्टमर, बट मैक्सिमम इंडिविजुअल इफ वी गिव प्रॉपर फीडबैक. कह रहे ये फोन का कैमरा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था. There is going to be a next version launch and you will see the next type of Apple coming in. Are you having influence over it? Yes, you are having, but the point is, do you utilize it? That's another thing. So, यहाँ पे देखो, who all are stakeholders here? Customers, suppliers, regulators. Regulators का मतलब government authorities. Then employees, the perform organizational activity. Everyone out here is a stakeholder. याद रख लो, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर अलग है. शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर खरीदता है उस कंपनी का. दैट इज अ शेयर होल्डर. बट अ पर्सन हु इज जस्ट हैविंग इंटरेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इज अ स्टेक होल्डर. क्लियर? एनी डाउट इन दैट? नो? Then what are the assets in a company? Assets are those people, those things which are utilized in an organization. Okay, assets are those which are utilized in an organization. Business and organizations have assets, perform their operations. This includes materials, vehicles, properties, machines, etc. Now, operating environment. All business organizations operate within a business environment which includes such as economics. पढ़े थे, याद है कुछ? पेस्टल एनालिसिस कुछ याद है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 10th में भी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके अंदर क्या आता? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल. दोज हु आर ऑनलाइन कैन आल्सो स्पीक. You're not losing out on your voice on this. All business organizations operate within this business environment only. What all are there? Political, social, economical, technological, environmental, legal, etc. और ये further आगे chapters में आने वाला भी है. Then managed activities, business activities. What happens here? Inputs, activities, and output. This is what is a business example of how businesses run. Let's move ahead. How business organizations differ? Look, it differs based on the size, right? There's a small business, that's a big business. Oh, small and big कैसा होगा? Based on their net assets, based on their employees, based on their revenue, based on their operating locations. अब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है. दिस इज इतनी बड़ी कंपनी, 10,000 लोग काम करते हैं उसमें, जगह जगह पे उसके ऑफिसेस है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिलेट कर पा रहे हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को पूछता हूँ, वेयर कैन आई गेट द बेस्ट बर्गर? कहाँ मिलेगा बेस्ट बर्गर? बोलो, कहाँ मिलेगा बेस्ट बर्गर? पिस्ता हाउस. आप कहाँ मिलेंगे? बर्गर किंग. हाउ आर यू एबल टू जज इट? वो पे वहां पे ऐसा हो रहा है बिकॉज पिस्ता हाउस के आउटलेट्स अक्रॉस हैं. अक्रॉस हैदराबाद है ना, बर्गर किंग के आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया है, अक्रॉस द ग्लोब है, which gives them that credibility कि अरे वो बड़ी कंपनी है भाई, वहां पे चीज अच्छी होगी. That's based on that size and revenue, operating locations. Then ownership styles. Ownership styles are sole proprietor, partnership, private limited companies, public limited companies, and then cooperative. About different types of companies. Sole trader, one person running the whole show. उसको हम बोलते हैं शटर बिजनेस. क्या बिजनेस? शटर. शटर हम खुद ही शटर खोलते हैं, सब काम करते हैं, उसके बाद खुद ही शटर डाल के वापस आ जाते हैं.
that is sole trader. Then comes पार्टनरशिप्स के अंदर भी उसको शटर बिजनेस ही बोलते हैं, बस 4-5 लोग ज्यादा बड़े आते हैं, उन लोग ही पूरा काम करते हैं, पूरा काम खत्म करके आ जाते हैं. इट्स द सेम थिंग. देन कम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पे क्या है, कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो ही इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में they only invest, they run the company, they hire employees, they have the structure and run the company. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या रहता है, ओनर्स कौन है, ओनर्स वो लोग हैं जो शेयर होल्डर्स रहते हैं. The people who purchase the share of the company are the shareholders and the owners of the company. They operate it, but they don't run it. It is run by the management. And then come towards cooperatives. Cooperatives क्या करते हैं काम अपना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए they give back it on a lesser price, and you have to be a member of that cooperative to get a discounted price from that. Then coming up funding activities. Funding आप या तो लोन लो या तो खुद का पैसा लेके आओ, which is debt is a loan, equity is आपके खुद का पैसा आप लेकर आओ बिजनेस में. Okay, borrowing from banks or selling your own shares to investors. इन्वेस्टर लेके आए तो इक्विटी होता है. इस डाउट, इक्विटी याद रख लो, खुद का पैसा है या फिर शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बोलते हैं इक्विटी. एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई एक, और एक हो गया सेलिंग ऑफ गुड्स. या तो आप कोई प्रोडक्ट बेचो फिजिकली या फिर सर्विस बेचो. सर्विस क्या हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस सर्विस. अगर वही सर्विस आपको एक रिकॉर्डेड प्रोडक्ट में मिल गई तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं सर्विस एज अ प्रोडक्ट. Then comes organizational structure, flat, tall, wide, narrow. Flat, tall मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, flat, tall, tall, flat. अरे भाई, the structure of giving instructions. Suppose if you are having a team and you are managing 2 people and those 2 people are again managing another two people, तो उससे क्या हो जा रहा, आपका स्ट्रक्चर टॉल बन जाएगा. Okay, there's one person managing 2 people and then these 2 people are managing another 2 people and then these 2 people are managing another 2 people, तो उससे क्या हो रहा है, आपका स्ट्रक्चर टॉल बन रहा है. या फिर if suppose there is one person handling 10 people, तो ये क्या हो गया, फ्लैट. सेम goes with wide and narrow, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड. ये क्या हो गया, वाइड हो गया, ये नैरो हुआ. सेंट्रलाइज्ड इज, दिस इज सेंट्रलाइज्ड वर्क, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड वर्क. आई गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दीस एग्जांपल्स. आप सब काम खुद से ही कर रहे हैं, आप खुद डिसीजन मेकर हैं और आप ही के नीचे सब लोग काम करते हैं, पूरे आप ही को रिपोर्ट करते हैं. सेंट्रलाइज्ड वर्क. आप जिम्मेदारी दे दिया हर एक को कि आप अपना अपना देख लो, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वर्क. अब जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन वे ऑफ वर्क हाउ इज हैपनिंग, इज इट सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड, सही में सेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब नाम के लिए तो डिसेंट्रलाइज्ड है. हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके बाद फिर हमारे पास चीफ मिनिस्टर भी है. चीफ मिनिस्टर कैन टेक केयर ऑफ द कंप्लीट तेलंगाना व्हिच इज हैपनिंग, and there are chief ministers for each state, and then each chief minister goes on and reports towards the higher authority, which is the PMO. Now here understand this, क्या सही में ऐसा हो रहा है वो अलग क्वेश्चन है, but the structure is decentralized. But is it actually centralized like other nations? It can be. जैसे कि कुछ कंट्रीज में जैसे a king rules that particular country, when a king rules that particular country, that is centralized power. Okay, आजकल एक नया आया, वो kingship में भी they are trying to make sure that there is little bit of democracy and people's voice is heard, ताकि उनकी kingship बनी रहे. वरना अगर वो लोग अपनी
प्रजा को संभालने में ही रहे तो फिर इट विल बी अ बिग टाइम प्रॉब्लम. देन कमिंग अप टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी में क्या है? दो स्ट्रैटेजीज वहां पे मेंशन है. कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन. ओके. Why will a person buy Samsung and not iPhone? Why will a person buy Samsung and not iPhone? Those who are there online can also answer. दो फोन खरीदना है, सैमसंग है या आईफोन, क्यों खरीदेंगे? सैमसंग क्यों खरीदेंगे? इंटरेस्ट. ओके. फीचर्स पे जाएंगे. चलो, सैमसंग या आईफोन. इज इट द प्राइस? एंड्रॉइड या आईफोन? प्राइस के बेस पे डिफर होता नहीं होता? वो होता ना. प्राइस किसका कम है? एंड्रॉइड फोन का प्राइस कम है. कैन दैट बी अ कॉस्टिंग स्ट्रेटजी? क्या हम अपना कॉस्ट कम बता के बेचेंगे? एंड्रॉइड डज दैट. Here our cost is come. Our costing is less, you can buy our product. We have different variations also. What strategy is? Our costing strategy, cost leadership strategy. Then what does iPhone do? We are different than them. They're not like that. We are having different features. We are having different features. Why it is much more better. Okay. I have both phones. I have Android and iPhone. Both are good. मेरे को दिखता नहीं है इसमें कुछ फर्क, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क ला लेते हैं वो लोग उसको मार्केटिंग करने के वक्त. So basically, that's a strategy to come up with, which can be discussed further in detail upcoming. Then talking about culture in an organization. Culture in an organization, you guys follow cricket or football, something like that? Cricket, football, देखते? Boxing, yeah, और कुछ? Any other sport? Hound? Any other sport? No. यहाँ पे the point here is the leadership style which comes in. जैसे कि क्रिकेट में विराट कोहली बॉट अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी बॉट अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एंड दैट लीडरशिप स्टाइल इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूड. ऐसा कोई बुक में नहीं होता है वो लीडरशिप. फॉर एग्जांपल, विराट कोहली सेड दैट you have to be this much fit to be there in this team. Now that's a cultural thing. It's not a rule or regulation. It's a cultural thing that you should be that fit enough to be there in the team. ओके. दैट्स अ कल्चरल थिंग. अब जैसे कि आज आप लोग क्लास को आए, देयर इज नो ड्रेस कोड फॉर द क्लास. इट्स अ इनफॉर्मल ड्रेस कोड. इट कैन आल्सो बी अ formal dress code, can also be there, or else there can be different things which influence the culture of the organization. अब जैसे कि हमारे वक्त पे क्या होता था, मतलब इन स्कूल और कॉलेज सर से बात करना है तो बहुत दूर की बात होती थी, या उनके साथ बात करके कुछ बैठ के दूसरी बात करना है तो इट्स अ way different thing. But now all that gap is gone. To connect with anyone, we can connect with anyone through social media. The things have changed, the structures have changed in the market, the culture has changed in the market. In fact, think about a local business from knowledge or experience. What size it is, how is its size measured, what does the organization do, what are its activities. Can we talk about any organization now? कोई भी organization के बारे में बात करेंगे हम लोग. Let's take some known organization everybody knows. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलो. Any name of an organization? Apple, Samsung, Burger King. Apple. ठीक है. What size it is? How is it measured? कितना है उसका इनकम रेवेन्यू? Can we Google it? Apple का गूगल करो ना. रेवेन्यू कितना है लोग का? कितना है रेवेन्यू? जस्ट गूगल रैंडम.
85 ट्रिलियन में मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग अर्निंग होगी शायद कुछ ज्यादा होगी लास्ट ईयर 391 बिलियन क्या कर रहे हैं नकली अपन लोग यहाँ पे बिलियन और ट्रिलियन पीछे नहीं आए खैर इनकम और रेवेन्यू उनकी समझ में आ गई नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स such as buildings machinery land which it owns etc etc number of people working there कितने लोग काम कर रहे होते हैं 1,64,000 at Apple's payroll. Okay. So on that time, on that term, is it a big organization or not? Yes, it is a big organization. Now let's take another organization. दूसरा organization लो. Amazon. Huh, let's take Amazon. Search. What is the revenue of Amazon? Amazon का revenue. Search and then you search how many people work at Amazon. $638 billion is the last year revenue. Next, 16 lakh 8,000. तो उस हिसाब से फिर हमारा एप्पल छोटी कंपनी बन गई ना well anyhow we can go on keep on doing this type of activity again and again but for now let's move ahead talking about commercial sectors production oriented definition of it a common market or output defines each other's sectors मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सेक्टर जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहती प्रोडक्शन ओरिएंटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के पीछे लगे होते हैं ओके सेल्स में वो लोग नहीं रहते ज्यादातर मार्केटिंग के लिए वो लोग के पास चैनल पार्टनर्स रहते हैं sectors are defined by what their component produces by a company produces a tool which will be classified in different sector from a company production oriented aims to define available supply in the market उनका काम क्या है सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना तो प्रोडक्ट कितना अच्छा बनेगा उसी के ऊपर उनका फोकस रहता है आगे चल के मार्केटिंग करने के लिए वो लोग के पास they have a different set of people all together different set of team all together who does all this work and that is market oriented sectors are defined by markets component companies serve the list of sectors under GICS is basically global industry classification standards healthcare energy materials and all these things हमको उतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है वो it's just for an understanding purpose that these all are the sectors where they are working on now we have a question here classify the business organization by the given sectors ऐसे ऐसे सवाल आएंगे आपको एग्जाम में ऐसे ही सवाल रहेंगे अब जैसे कि एक बैंक इज फ्रॉम पार्ट ऑफ विच सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज आई वांट यू गाइस टू राइट दैट डाउन नंबर 1 बैंक के बाजू क्या है बैंक के बाजू आप क्या लिखेंगे आंसर फाइनेंशियल सर्विसेज ओके नाउ दैट्स योर आंसर आई एम नॉट सेइंग दैट इज द आंसर ओके उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा अरे ये आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं हाँ लिखो फाइनेंशियल सर्विस लिखो
accountancy firm, again financial services, the stock exchange, then cocoa grower. Yes, कोकोआ क्या होता है वो चॉकलेट कॉफी का उत्पादन था ना हो सकता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज फिर रबर प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग में रबर प्रोड्यूसर आप लोग का आंसर है यू कैन राइट एनीथिंग हम लोग देखेंगे उसके बाद कैटल फार्मर सैल्मन फिश गोल्ड माइन ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टोन क्वेरी ये सब लिख लो पहले आप लोग ऑप्शंस आपके फर्स्ट राइट डाउन दीज ऑप्शंस समवेयर write down your options first and then fill that up ऑप्शंस तो लिख लिए ना आपने चलो अब आंसर करते जाओ कोकोआ ग्रोवर तक से कर लिए थे आप लोग समझ रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग कैसा मैच द फॉलोइंग है ये एबीसीडी का नहीं है यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट एंड आंसरिंग इट तो प्लीज आंसर लिखते जाओ अपना आंसर बार बार ऊपर if I want me to scroll down
Everyone's done. Shall we check the answers now? Ready? लिखिए ना पूरे आंसर्स चेंज नहीं कर सकते मैं क्या डन विद आंसर्स यू कैन नॉट चेंज इट ओके मैं चेक करूंगा फिर तो पहले वाले तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक एक्सचेंज तक उसके बाद एग्रीकल्चर एंड कमोडिटीज कोकोआ ग्रोवर फिर उसके बाद रबर एंड कैटल फार्मर इज अगेन एग्रीकल्चर एंड कमोडिटीज फिर सैलमन फिशरी गोल्ड माइन सैलमन फिशरी तक एग्रीकल्चर एंड कमोडिटीज उसके बाद गोल्ड माइन माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन उसके बाद ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन कंपनी अगेन माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन स्टोन क्वेरी mining and extraction soft drinks producer manufacturer okay chemical plant क्या लिखे okay mining extraction लिखे cloth manufacturer तो cloth factory manufacturer shoemaker then house builder construction road builder construction cement supplier construction किसको एक गलत आया एक ही आया गलत दो गलत आए यासिन तुम्हारा तीन तुम्हारा कौन से दो गलत आए सीमेंट सप्लायर को तुम क्या लिखे एंड यू फिशरी को क्या लिखे थे फिशरी को क्या लिखे आप हाँ सही है फिर ठीक ऑलराइट फाइन एग्रीकल्चर कैटल फार्मर भाई नहीं भाई वो एक्सट्रैक्शन अलग हो जाता है एग्रीकल्चर अब दूध जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या था ना तो दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो बेचे लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर में आता एग्रीकल्चर क्या है उसको पाल तो उसको जो है बड़ा करते हैं वो एक्सट्रैक्शन इज बेसिकली माइनिंग एंड माइनिंग अलग है वो अलग है वो एक्सट्रैक्शन की मीनिंग अलग हो जाती है एनी हाउ so what we are going to do right now is we are going to pause our session for business and technology for now pause it take a break of 10 minutes and then resume back for financial accounting okay so all those who are there in the online session can yeah can just be in the session let me just pause this for now